कैन यू गाइज हियर मी? मैं ब्रश करके आता हूँ, एक 2 सेकंड दे दो मेरे को यार. आई डोंट नो व्हाई आई क्लिक्ड ऑन गो लाइव बटन. आई क्लिक्ड इट टू सून. टू सून. मैं बस ब्रश करके आया भाइयों. म्हणजे मी दार बंद करतो. वेल लेडीज, ऑलराइट, आज हम थोड़ा सा लॉक इन करने वाले हैं दोस्तों. I have many things to read. Beato chair promotion. At its peak, brother. At its peak. ठीक है, आज हम रीडिंग करने वाला है. वी आर गोइंग टू स्पीड रन अ रिपोर्ट जो कि मुझे पढ़ना था. वी आर गोइंग टू स्पीड रन दैट शिट. Remember as much as we can. This is a practice for me. I'm getting what I call warm up. ठीक है. So as you guys know, I'm a market analyst. I study markets, and I want to sort of get ahead in my career as a market analyst. I want to become a consultant. I want to become an analyst, a senior analyst, and an associate and all of that stuff. So I want to get into VC somehow, as to work as a VC analyst, that is venture capital analyst. And to get there, I need to read a lot about startups. I have to read a lot about different markets. I have to learn a lot about finance. I have to understand what is PE, private equity. I have to learn many concepts that I haven't studied at all in my life before. So we are going to do that. We are going to read reports. We are going to discuss about those reports, what we think about them, and we are going to speed run that shit. Right? I think this is going to be very beneficial for me in whatever I do. In the future. वो broker आए कि नहीं? बाकी lights timer लगाना है. Yes, we will do that. हम timer लगा के काम करते हैं. I think that's a better idea, guys. ठीक है? Yup, timer sounds to me like a good idea. वो broker आए कि नहीं? कौन ब्रोकर एग्जैक्टली? येस, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट विथ हु ब्रोक, मतलब कौन से ब्रोकर्स?
So this is something that I frankly want to do. बाकी लाइट्स आई थिंक गॉड डैम फ़ोन ब्राइटनेस आई नो भाई बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली आई बॉट अ न्यू फ़ोन गाइस. वीवो का नया फ़ोन लिया मैंने. इट्स अ वेरी टाइम पास फ़ोन बाय द वे. आई एम गोइंग टू बाय अ बेटर वन. जब आईफोन 18 वगैरह आएगा तो आई थिंक आई विल बी बाइंग दैट. बट फॉर दिस ईयर मतलब मेरा जो पुराना फ़ोन है वो थोड़ा सा खटारा हो चुका है तो मैंने एक नया ले लिया है स्टैंड बाई के लिए. मतलब फ़िलहाल तो मैं 3 फ़ोन्स यूज़ कर रहा हूँ. एक मेरा ऑफिस का, एक मतलब जो बिज़नेस के लिए मतलब जो भी स्टार्टअप के लिए प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करता हूँ मैं. आई वोंट इवन से स्टार्टअप एट दिस पॉइंट, वो प्रोजेक्ट है. सो प्रोजेक्ट के लिए, ऑफिस के लिए और मेरा एक पर्सनल. तीन तीन फ़ोन्स लेके घूमता हूँ मैं आजकल. इट्स इनसेन. सिम्स बी 3. हाँ सिम्स बी 3, तीन तीन सिम्स भी है उसमें. लेट मी जस्ट सी यार, लेट मी जस्ट चेक. ओके. एक नंबर से ब्लॉक होने पर अगला नंबर यूज़ करो. यप यप, दैट्स द स्ट्रैटेजी भाई. दैट इज़ द फ्रिकिंग स्ट्रैटेजी भाई. यू एक्सपोज्ड मी लिटरली. ठीक है, वी विल बी स्पीड रनिंग दिस शिट. लेट मी जस्ट सेटअप एवरीथिंग भाई. मुझे देखने दो सब कुछ सेटअप सही से हुआ है ना. जस्ट अ सेकेंड दोस्तों. दिस लुक्स फाइन. यहाँ पे हमें क्लॉक लगाते हैं है ना. क्या बोलते हैं उसको, क्लॉक, टाइमर, वॉट एवर. क्लॉक. और इस क्लॉक मतलब क्लॉक पे आई थिंक आधा घंटा लगाना चाहिए मैंने टू रीड दिस 100 पेज रिपोर्ट. आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू गिव माई सेल्फ 30 minutes to read a 100 page report. But let's just say 45 minutes, right? Let's give ourselves a good amount of time to understand the report deeply. ठीक है, एक काम करते हैं अभी अपन. यहाँ पे विल टेक लेट्स से 50 minutes, राइट. 50 minutes तो आई थिंक काफ़ी होने चाहिए मेरे ख्याल. ठीक है, सेव एंड देन विल स्टार्ट इट. ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड राइट नाउ. वहाँ है क्लॉक में टाइमर. यही तो है. दिस इज़ द टाइमर ना. ये 50 मिनट का टाइमर है. मैंने स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो जाएगा. इसको फुल करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे. समझना है या ईशान अवस्थी रीडिंग करना है? नहीं नहीं नहीं, समझना है. वी हैव टू गो डीप इनटू द रिपोर्ट. उसको पॉप आउट कर दे सो दैट यू कैन मिनिमाइज. नो आई डोंट नीड टू. आई थिंक दिस इज़ गुड. दिस इज़ गुड इनफ. ठीक है, सो उसको पॉप आउट कर दे सो दैट यू कैन मिनिमाइज. आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी गाइज. ठीक है, या आई गेस, या आई थिंक इट लुक्स परफेक्ट. एक काम करता हूँ मैं बस इसको. व्हाट आई कैन डू इज़ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट इट लुक्स डिसेंट ना अभी. नो, जस्ट अ सेकेंड यार. लेट मी चेक. डज इट लुक फाइन? नो यार, एक सेकेंड. मैंने उसको बड़ा कर दिया ना तो मेरे को इसको भी आई थिंक इस साइड से बड़ा करना पड़ेगा, है ना. Why does that go outside my screen in that case? Why? I don't know why is it going outside my screen. अच्छा हाँ, मैं पूरा स्क्रीन ही वो बड़ा कर रहा हूँ ना. अच्छा ओके, नेवर माइंड भाई. आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. या आई कैन सी द चैट. तभी कह रहा पॉप आउट कर. अरे कोई नहीं. आई थिंक स्प्लिट स्क्रीन सही दिख रहा है अभी.
Okay, let's begin. ठीक है, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल ट्रेंड बुक 2026. तो भाई सीन ये है कि वी आर सो आई हैव डाउनलोडेड दिस रिपोर्ट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ IVCA, जो कि वेंचर कैपिटल एसोसिएशन है, इंडियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन. So I was reading this just because I'm interested in India के startup industry in general. So if you guys don't have context of what VC means, VC means venture capitalist और venture capital essentially, जो कि startups या फिर जो नए companies रहते हैं वो raise करते हैं. So there are different VC के funds रहते हैं. वो Google whatever में report पे zoom मारना. अच्छा, okay. Yep. I think it's better now. Is it looking better? ओके, ठीक है, परफेक्ट. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. सो देर आर वॉट एवर नए जो स्टार्टअप्स आते हैं, जनरली पीपल आई मीन दीज VCs क्रिएट फंड्स जहाँ पे वो फंडिंग इकट्ठा करते हैं इन्वेस्टर्स से और वो पूल बनाते हैं बड़े फंड का, एंड दे स्टार्ट देन इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल स्टार्टअप्स. बेटर नो, ठीक है, परफेक्ट. चलो, sectoral trends reflects a blend of continuity and diversification. Financial services reclaimed the top position. Support. हाँ, मैंने ये थोड़ा सा पढ़ा था. India's private equity and venture capital industry has continued to be the evolution of deep, mature and globally relevant asset class that is defined by the expanding sectoral breadth and an increasing resilient pool of investors and entrepreneurs. The year 2025 long trajectory डिस्पाइट नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट. ये तो हम अपन को पता है था. टैरिफ रेजिम्स एंड करेंसी प्रेशर्स, इंडिया इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल अट्रैक्टिव प्राइवेट कैपिटल डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड. ये तो पता है अपन को. So in 2025, India's PEVC ecosystem delivered a performance that underscored the resilience of the renewed momentum. ये तो ठीक है. With this we already know कि 60 billion का फंडिंग हुआ है लास्ट ईयर. And somebody is calling me. God damn, bhai. Wrong time, Aniket. Anyway. In 2025, India's PEVC, okay, which is मतलब फंडिंग 60.7 बिलियन का फंडिंग हुआ था 2025 में. That is around 1,475 deals, which is 8% increase in value and 9% increase in volume. मतलब more or less same. Growth and startup investment staged a meaningful recovery upward moderate during the year. Sectoral trends continuity है, पढ़ा था मैंने. Financial services reclaimed the top position, supported by the strong Indian banking, housing, finance, and fintech. So real assets. Comprising of infrastructure and real estate remain core investment pillars together. I don't think real estate and infrastructure comes under pure play PEVC. मतलब PE में आता है ये, क्योंकि आई थिंक ब्लैक स्टोन इन्वेस्ट करता है. ब्लैक स्टोन जो कि प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है, इज़ वॉट आई हैव हर्ड. So together contributing to about 1/3 of the total capital deployed. ठीक है. Meanwhile, technology, food, agriculture, industrial products, automotive sectors are very robust, signaling a broader distribution than traditional. So startup actively saw meaningful expansion as well, with India's technology-led entrepreneurial ecosystem continuing to demonstrate depth, scale, and innovation. ठीक है. Okay. एग्जिट एक्टिविटी रिमेन स्ट्रॉन्ग. अभी एग्जिट मतलब अभी मेरे को ये बात एग्जैक्टली पता नहीं है, बट वॉट आई अंडरस्टैंड इज़ कि एग्जिट इज़ बेसिकली व्हेन अ स्टार्टअप इज़ गेटिंग अक्वायर्ड बाय अनदर स्टार्टअप. सो दैट इज़ व्हेन द एक्चुअल एग्जिट फॉर द फाउंडर और फॉर द इन्वेस्टर हैपन्स, राइट. तो मतलब इन्वेस्टर या फिर फाउंडर जब उस बिजनेस में से बाहर निकलता है, बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालता है, तब उसको एग्जिट मिलता है. इज़ वॉट आई अंडरस्टैंड. So with 32 billion in realization, the second highest level ever recorded. अच्छा, ठीक है. Strategic exits drove nearly half of the exit. Okay, ठीक है. Supported by revival in corporate M&A. This exit performance achieved despite periods of equity market volatility and demonstrates the strong India's capital markets and increasing maturity of its exit pathways across private and public routes. ठीक है.
As India steps into 2026, the macroeconomic landscape remains dynamic, while sustained geopolitical volatility and currency movements and valuation adjustment may prompt a measured pace of deployment. ठीक है. The medium term outlook remains optimistic. Strong GDP growth projections and supportive monetary conditions, a robust IPO pipeline, and improving trade clarity all position India as a compelling destination for global private seeking. ठीक है, ठीक है. This trend book provides a comprehensive data driven. ठीक है, this is fine. Sector specific momentum and the ये अपन को पढ़ना है. ठीक है, sector specific momentum. So from the entire sort of point of me reading this report is going to be that कि मुझे इसमें से I want to research about specific topics जो मेरे को interesting लगते हैं, right? It can be anything. It can be mobility. It can be any industry for that matter, right? It can be variables. Any industry that I want to study, I will go deeper and create detailed report on that industry. So I want to figure it out after reading this report. So the major attraction for, so I'm creating this report in order to send this report to different VCs, because VCs are actively looking for research reports, and if I keep on providing them with my own reports, with my own study, then I want to do that. I want to sell my reports to these VCs and stuff. Okay. It examines emerging themes, evolving investor strategies, sector specific momentum, and the opportunities. Okay. So I mean, it is very difficult to do these research papers, because I mean, you do usually have to do a lot of secondary analysis and a lot of primary analysis as well. तो आई थिंक मैं वो करूँगा दोनों भी. The trend book provides a comprehensive and data driven view of the factors shaping India's PEVC industry. It examines emerging themes, evolving investor strategies, sector specific momentum, and the opportunities that lie ahead for a market that continues to grow deeper and more sophisticated each year. ठीक है. So this is something that I have heard as well. It is getting more and more sophisticated as the time goes. I extend my gratitude to EY team. ठीक है. Thorough research and thoughtful analysis in bringing this report together. Also, my sincere thanks to all the members of the partners and stakeholders for your continued engagement and support as we collectively work toward strengthening the ecosystem. I invite the active participation in IVCA initiatives and contribute to shaping the next chapter of growth. Together, we can continue build a vibrant, future-ready PEVC landscape for India. Fair enough. Fair enough. So preface. Okay, I have read this actually. मैंने ये पढ़ा है और इस यहाँ तक तो सारा सेम ही कंटेंट है. सेक्टर्स सच एज फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, ये सारा टुगेदर अकाउंटिंग फॉर 72% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट. मतलब ये सारे सेक्टर्स जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, ठीक है, these sectors were also the top 5 in 2024, with only a positional shift in financial services and infrastructure which held a top spot last year slipped to the second place and financial services moved up. ठीक है. Within these top sectors, financial, real estate, technology registered year-on-year growth, whereas infrastructure and e-commerce saw a decline in the investment activity. Beyond the top 5, other sectors experienced notable churn. Food and agriculture, retail and consumer products, automotive, industrial products, pharmaceutical and aerospace and defense recorded growth compared to the last year, while healthcare, telecommunication, logistics, transport, media and entertainment, education saw a decline in the investment activity. Okay, so PEVC exists in 2025, also registered as the second highest exit value. ये तो ये भी हमने पढ़ लिया पहले. Surpassed only ठीक है in 2021, represents a 17% increase over 2024 despite a 10% decline in the exit volume, which fell. अच्छा, वॉल्यूम कम हुआ है, वैल्यू बढ़ गई है, वॉल्यूम कम हुआ है, which fell from. Okay, ठीक है, that's okay.
That's okay. The report had evolving strategies response to shifting market dynamics. So this is what I want to study, right? It's already been 11 minutes, guys. We gotta speed up. Investment continues to rise 8% year on year. ये हो गया हमारा, ये पढ़ लिया हमने. With investment led momentum registered at 56% increase in the deal volume, 282 deals. ठीक है. मैंने कॉन्ट्रास्ट अदर इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज क्रेडिट बाय आउट एंड पाइप. ये पाइप डील्स क्या रहता है मेरे को नहीं पता है. आई थिंक दिस वन आई नीड टू सर्च. पाइप डील्स क्या रहता है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटी. ओके ठीक है, फेयर इनफ. एक्सपीरियंस ए डिक्लाइन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. ठीक है. द ग्रोथ इन्वेस्टमेंट लेड द मोमेंटम रजिस्टर 56% इन द डील वॉल्यूम वाइल द स्टार्टअप सेगमेंट सॉ 19% rise. In contrast, other investment experience decline compared to the previous year. ठीक है. ग्रोथ स्टेज और स्टार्टअप स्टेज वाले में ग्रोथ हुई है. सेक्टोरल एलोकेशन मोस्टली इन लाइन विद द प्रीवियस ईयर. द टॉप सेक्टर्स कंटिन्यू टू डोमिनेट. ठीक है. लीडरशिप पोजीशंस इन द ओवरऑल डील एक्टिविटी. फाइनेंशियल सर्विसेज इमर्ज एज द लार्जेस्ट सेक्टर. ठीक है. रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स एज द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लार्जेस्ट. ठीक है. कलेक्टिवली दीज टॉप सेक्टर्स. ठीक है. नोटेबली 6 सेक्टर्स. ओके. ऑल टाइम हाई इन्वेस्टमेंट. ठीक है. ठीक है. रियल एसेट्स हेल्प्ड होल्ड द फोर्ट. ठीक है. रियल एसेट्स 2% से बढ़ा है. 8% डिक्लाइन हुआ था 2024 में. प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट 12% मॉडरेटिंग. 15% ग्रोथ रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस ईयर एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द ओवरऑल. ठीक है. प्योर प्ले पीवीसी भी बढ़ा है काफ़ी अच्छे से. एग्जिट्स कंटिन्यू टू राइज फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर. सो सेकेंड हाईएस्ट इन क्या पीवीसी एग्जिट. सो ओके. ये भी ठीक है. स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स रिबाउंडेड. बाप रे. ओके. रीचिंग 16 बिलियन अकाउंटिंग फॉर 48% ऑफ द टोटल एग्जिट्स ड्यूरिंग द ईयर. स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स रिबाउंडेड. अभी ये स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स क्या होता है. अच्छा. इज अ प्लान ट्रांजिशन बिजनेस ऑफन इन्वॉल्विंग मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड सेल्स एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू एंड इंश्योरिंग द स्मूथ ट्रांजिशन. ठीक है. सो मतलब जब स्ट्रैटेजिक नहीं रहता तो फिर क्या रहता है, फिर अनस्ट्रैटेजिक रहता है क्या. मतलब स्ट्रैटेजी तो होगी ना उसके पीछे. एनीवे ठीक है. फंड रेजिंग एक्टिविटी टेस्ट रिकॉर्ड हाई. फंड रेजिंग एक्टिविटी सर्च. ठीक है. significant 9.8 billion raised in the previous year. A number of fund raises also hit a historic peak, rising 35% year on year. 123 fundraisers, marking the highest annual count to date. So hit a historic peak. फंड रेजेस बढ़े हैं. ठीक है. फंड रेज करना मतलब क्या. फंड अभी मेरे को बेसिक चीज़ है. राइट. फंड रेजिंग मतलब क्या रहता है. फंड रेजिंग में अभी क्या रहेगा. फंड रेजिंग में आई डोंट थिंक इक्विटीज आती है. इक्विटीज आती नहीं है. राइट. फंड रेजिंग कैन बी इफेक्टिवली अचीव थ्रू क्रिएटिव इवेंट्स, पीयर टू पीयर कैंपेन्स एंड डोनेशंस essentially. राइट. या सो दे डोंट टेक इक्विटी essentially. 35% से बढ़ा है वो. और मार्किंग द हाईएस्ट एनुअल काउंट डेट. आई थिंक वो जो फंड रेज करता है वो बेसिकली इट इज़ लाइक अ चैरिटी इटसेल्फ प्रेटी मच. राइट. एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना, ये भी खोल के रखता हूँ भाई. Man shit, don't give me that. What are bro, don't give me that bullshit. What. Nah, hell nah, dude, hell nah. I'm not doing that right now. Okay. PVC investment January 37% lower in value compared to December. Yeah, fuck off. 36% lower than January 2025. ठीक है. So now what is this chart about? So the investments कहाँ पे है उसका segmentation किया है. Growth stage, startup stage, buyout, credit, private investment in private equity. अभी ये मेरे को नहीं पता credit क्या रहता है.
credit, what does credit mean? I don't know. Buyout is I think completely वो कंपनी को buy out कर दिया. Startup is like the first stage, before the growth stage. Startup stage is there, right? So growth stage में बहुत ज़्यादा PVC एक्टिविटी होता है, उसके बाद स्टार्टअप में होता है, उसके बाद बायआउट्स में होता है, उसके बाद क्रेडिट में होता है, उसके बाद PIPE में होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम. ठीक है. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू विच इज़ डिफरेंट इन ईच मंथ इट सीम्स, क्योंकि 2026 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ था. 2025 दिसंबर में भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ ही था. मोर और लेस आई थिंक इट इज़ द सेम. ठीक है. बायआउट्स कभी ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है. फेयर इनफ. तो नंबर ऑफ़ डील्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बायआउट्स क्या है. ओके, बायआउट्स लोअर नंबर में होते हैं, स्टार्टअप्स हाई नंबर में होता है, क्योंकि स्टार्टअप का ऑब्वियसली डील साइज़ ज़्यादा होगा, मतलब डील का वॉल्यूम ज़्यादा होगा लेकिन वैल्यू कम होएगी. लेकिन ग्रोथ में वॉल्यूम कम रहेगा लेकिन वैल्यू ज़्यादा रहेगी, फॉर ऑब्वियस रीजंस. ठीक है. ओके, ठीक है, वॉट एवर. सो द ग्रैंड टोटल ऑफ 3 पॉइंट वॉट इज़ दिस 3.8 बिलियन इन जनवरी, मतलब 2026 में. फेयर इनफ. Exit activity started to subdue note, recording exits at 72% lower than those in December 2025, 8% higher than January 2025. ठीक है. Exhibit B, secondary IPO, strategic, open market and buyback. Now I don't know what all this actually means, but I have to know, maybe. So exit activity started on a subdued note. What is a subdued note? I think we have to search. Subdued note typically refers to a situation where markets or stocks are performing weakly or lack of enthusiasm. अच्छा, exit activity कम हुआ है. With January recording exits 72% lower than those in, so exits का volume कम हुआ है. Those in December 2025 8% higher than in January 2025. ठीक है, ठीक है. So it's always lower in January, right? I mean, that is what we can say here. ठीक है. So I want to understand this graph a little better. So मैं काम करता हूँ. It's fine if my shit, you know, if everything does not get completed in 50 minutes, but I want to understand this well. ठीक है. Oh my god, भाई. Need that snipping tool. इसको यहाँ से snip करता है. I don't think यहाँ पे snip करेंगे उसको, यहाँ पे करता है, so that we will get both the. एक सेकेंड यार, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरे को. ठीक है. ओके, यहाँ पे पेस्ट. एग्जिबिट ए, ठीक है. वह ओके, ठीक है. टोटल ड्रॉप शार्पली दिसंबर. ठीक है. बिग डिक्लाइन मंथ ऑन मंथ शोइंग फंडिंग एनवायरमेंट्स. ग्रोथ डील स्टिल डोमिनेट वैल्यू. ठीक है. सो एग्जिबिट बी में क्या बोला है? एग्जिट वैल्यू क्रैश्ड. अच्छा, मतलब एग्जिट फ्यूअर एग्जिट्स हैपेंड. ठीक है, दैट इज़ फेयर. IPO एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वीक. स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स ड्रॉप्ड हैवीली. अच्छा, अच्छा. कॉर्पोरेट्स आर नॉट एग्रेसिवली एक्वायरिंग स्टार्टअप्स. सेकेंडरी सेल्स स्टिल एक्टिव. लार्ज एग्जिट कैटेगरी जनवरी 2026. बिकॉज स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स. अच्छा, सेकेंडरी सेल मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा है
is what they're saying. Overall, inside big picture, the ecosystem is on a cool down phase. Investments are slowing down, exits becoming harder, liquidity drying up, shift towards secondary deals instead of IPOs and acquisitions. ठीक है. Simple one line summary, money is still entering startups, but getting money out has become much harder. Right. Fair enough. That explains a lot of things as well, right? Liquidity has gotten lesser, मतलब liquidity कम हुआ है basically. Factors that may lead to cautious approach in 2026, challenging year ahead. Yeah, I think that's fair. Complexities and several uncertainties yet to fully unfold at the time of writing this report. While the Supreme Court in the United States has struck down the higher tariff imposed under the Trump administration, reducing duties in the Indian export to 18%, the subsequent implications and the operational guidance is still awaited. These developments may influence the investor confidence in the near term. That said, the easing of the tariffs will help reduce uncertainty, support export competitiveness, and improve foreign exchange inflows. Market volatility also remains a concern. The increase in the security transaction tax, yeah, टैक्स बढ़ गया ना आई थिंक. सिक्योरिटी मतलब कौन से भी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अभी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है. Announcing the Union Budget 2026 triggered an immediate turbulence in the Indian equities, impacting the exit timing and the pace of PVCA deployment. That is also fair. Persistent geological tensions है पण ठीक है. The recent Iran-Israel-US conflict potentially have significant inflationary hydrocarbon prices. That is also fine. Corporate earnings, the earnings in the performance in early has been moderate, with the growth concentrated in sectors like financial services, IT, healthcare, industrials, while energy, metals, mining, telecom lagged. ठीक है. The divergence led to a correction across the broader market segment and contributed to continued record of foreign indirect investment selling over the past few months. ठीक है. Rupee depreciation, yeah, that is sad, with the levels touching 92 per US dollar, heightened fears of further weakening and risk of. ठीक है. Fair enough. Valuation gap. Additionally, the widening bid-ask spread has slowed deal closure. Volatility in the public market and sharp corrections in the mid-cap and small-cap is yet to materialize, reduce the sellers' expectations, while buyers have maintained discipline. This mismatch created a wide valuation gap, resulting in slower transaction closures. ठीक है. Yeah, basically the VC is not very liquid right now. If you invest in a startup in India, it's not very liquid. People are not able to take out their money essentially. Looking ahead, several micro and macro factors support a cautious optimistic outlook for 2026. Strong GDP growth is projected to be 7%. Goldman Sachs forecast placing the country among the world's fastest growing major economies and reinforcing confidence in the medium term expansion trajectory. The RBI cumulative 125 BPs repo rate reduction in 2025, combined with the inflation expected to hold near 4% target, provides a stable and a favorable. Yeah, the inflation is doing all right, I guess. Capex, the government's sustained commitment to public capital expenditure is another critical driver, and the capex of ठीक है. There's also fine manufacturing areas that not only promote economic activity but also unlock robust pipelines of private equity and infrastructure investors. ठीक है. Strong IPO pipelines, this will lead to strengthening exit visibility, a key consideration for PE and VC investors, supporting monetization opportunities and recycle capital back into the new investment. India US tariff deal. I think this is the interim agreement that they're talking about, that took place in February, targeting the tariff reduction to 18%, which we read earlier as well. Pharmaceutical, textiles, precious metals, and all of that stuff. This has to be seen in the light of the ruling legality and the eventual workaround available to India. While details are yet to emerge, the direction and the reduction of time is positive. The single
Largest factor impacting the investor risk appetite for the Indian exposure in the short term is the current conflict in the Middle East and oil and LNG prices. While the medium to long term outlook for India and the PEVC ecosystem is positive, the short term sellers will continue to exercise caution and implication are being better. So people won't actually sell off right now, right? मतलब जो भी उनके पास assets है, they won't be selling it off. The reason being the liquidity is very low in the market, the prices are not great, the valuations won't be favorable for the investor to take out their money. So we believe that the current confluence of the geopolitical will continue to raise the business risk premiums during 2026. This heightened volatility is expected to reduce trading multiples in mid cap and small cap companies and potentially slow down the IPO markets. We project Indian PEVC investment to pick up pace in 2026 as the factors highlighted above reduce the mid bids ask spread between investors and sellers and accelerating deal closures. Fair. So now where we are going? A brief, the review of 2025. This is going to be interesting, I think. PEVC investment. So these figures we will obviously discuss. 2025 से तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स आर अप इन 2020 आई मीन 24 से 25 में सारे मैट्रिक्स ऊपर है ऑल ऑफ देम आर ग्रोइंग सो विच इज़ अ गुड थिंग ठीक है let's read the rest of it. Since 2021, PEVC activity in India has transitioned from three different cycles: a post-pandemic surge in 2021, a correction in 22 and 23, and a volume-led recovery in 24 and 25. PEVC investment in India reached an all-time high in 2021 with 77 billion, oh my god, deployed, representing a 61% year-on-year surge. With this peak was followed by a 2-year correction with the investment declining 29% in 2022 and 55% in 2023. Acha, okay, sorry, 50 to 55.3 billion and reducing by 3% in 2023 essentially. Notably, while the number deals fell sharply by 31% in 2023, reflecting heightened caution in the global monetary tightening, the corresponding decline in the investment value was far more measured. Investors remained willing to back larger and higher conviction opportunities despite broader risk aversion. 2024 witnessed a recovery and rising. Okay. Strengthening further in 2025. ठीक है. So 2025 was also a good recovery year essentially, right? And the continued expansion of credit investment. In the contrast, buyout activity saw a significant 44% decline, indicating a shift in deal mix, excluding the abnormal 2021 peak. Average 56 billion between 2022 and 2025, a noticeable rise from 34 billion average during 2016 to 2020. That's a good thing. Over the last 5 years, the deal activity in India has maintained an upward trajectory with exception of temporary decline of 2023. Between 21 to 25, the market averaged 1,252 deals per year, representing 60% increase as compared to the average deals recorded in 2016 to 2020. In line with the broader investment patterns, growth ठीक है. While pipe and buyout and credit transactions softened in 2025 compared to 24, startup investment remained the most active segment, registered number of deals 767 number of deals in 2025, a 19% year-on-year increase. The growth investment followed. Fair enough. In terms of asset class activity, real assets backed investment registered 2% increase. This we have already read, which was 21.1 billion in 2024. It is now 21.6 billion in 2025.
and contributed 36% to the total PEVC investment in 2025. Okay, despite the increase in value, deal activity moderated slightly, with transactions declining by 3%. ठीक है. The moderate in real assets deal volume was offset by a pickup in pure play investments, which recorded 12% both in value and volume to reach 39.1 billion in 2025, up from 35 billion in 2024. Pure play investment accounted for an expanded 64% share in the compared to 62% share in 2024. This we have already read. Largest ये तो देख लिया. These were followed by technology e-commerce. That is also fair. Okay, and the number of large deals remained consistent with the previous year. And in 26, in 2025, mega deals greater than 1 billion also remained at 4 transactions within the large deal spectrum. Activity in category increased from 15 deals in 2024 to 18 deals in 2025, while deals in okay, so we have increased okay, so the volume of the deals जिसकी वैल्यू 500 मिलियन से 1 बिलियन तक थी वो लाइक अराउंड व्हाट 20% से बढ़ चुकी है, राइट? मतलब 15 डील्स से 24 में, 25 में 18 डील्स हो गए उसके. वाइल डील्स इन 100 million to 500 million brackets saw marginal decline from थोड़ा सा कम हुआ है. ओवरऑल लार्ज डील्स अकाउंटेड फॉर 41 billion in 2025, an increase of 8%, ठीक है, ओवर द प्रीवियस ईयर. ठीक है. So what are the mega deals? Are these like really large deals or something like that? ठीक है. PVC इन्वेस्टमेंट अभी कितना 2025 में इट वाज 60.7 बिलियन, जो कि बढ़ा है ऑब्वियसली. नंबर ऑफ डील्स भी बढ़ा है. वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी. प्योर प्ले PVC इन्वेस्टमेंट हैज ऑलरेडी ऑल्सो इंक्रीज बाय 12%. ये भी देखा है हमने. नंबर ऑफ डील्स भी 12% से बढ़ा है. सो लार्ज डील्स का वॉल्यूम सेम है 2025 और 24 में. एडिशन टू द ओवरऑल PVC ग्रोथ इंक्रीज़ हुआ है, क्रेडिट इंक्रीज़ हुआ है, स्टार्टअप इंक्रीज़ हुआ है, बाय आउट काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है. सो नोबडी इज़ एबल टू एग्जिट एसेंशियली. बाय आउट हुआ ही नहीं है बिल्कुल. सो पाइप has also increased, the total has also increased, financial services has increased, infrastructure has actually decreased, real estate has increased. ठीक है. PVC investment, this all of this we have seen already, right? In one or the other form ये पहले ही देखा है हमने. Okay, Karnataka recorded the highest number of deals is 344, followed by Maharashtra 336 deals. Interesting.
स्लोली इंक्रीजिंग अगेन राइट 2021 के बाद एकदम शार्प ड्रॉप हुआ उसके बाद फ्रॉम 2023 वी आर स्टडीली इंक्रीजिंग विच इज़ अ गुड साइन most of it is I think this only PVC direct investment रियल इस्टेट के अंदर तो रियल इस्टेट ऑल्सो बढ़ा है काफ़ी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर रादर कम हुआ है लास्ट 2 ईयर्स से इंटरेस्टिंग ठीक है Anyway, I don't know why I'm feeling so sleepy right now. My eyes are almost like closed. So I'm going to sleep. I'm tired as shit. Maybe doing a live stream tomorrow. I'm not quite sure. Let's see. Let's see, man. I have to plan these things though. मैं थोड़ा लाइव स्ट्रीम्स को प्लान करा करूँगा इसके बाद से एंड विल डू बेटर स्ट्रीम्स थोड़ा सा और थोड़ा आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू मेक दी स्ट्रीम्स entertaining or at least like helpful in some way to all of you all people watching this. I want to really make them helpful, but it's difficult, right? Because you are essentially studying. Because I'm essentially going to study in these streams. So I don't know if I'll be continuing on this channel. I don't know if I'll be continuing the streams on some other channel. I'm not quite sure. So let's see. Let's figure something out. In 1 or 2 days, I'll figure it out and I'll let you know, guys. What I think, what we can do. Uh, I'm doing the same thing on Instagram as well. I'm changing the content. I want to stick to just startups, news related to startups, the startup that I'm building, and all of that stuff itself. I won't be digressing into other topics which I used to do in the reels earlier. Which I won't be doing anymore. So it's all about everything is going to be about startups on this channel as well as on Instagram. So on this channel, my hello, हाँ हो जाओ अगर नाही रात्रभर आई मी झोपतोय आई बस असं कुठं लिहिलं आहे आई तू झोपतेस का हो या फॉर नाही मी वाचतोय त्याच्यामध्ये होय मी वाचत बसलो होतो तिथे आत्ता यूट्यूबवरती तू टायटल वाच त्याचं स्ट्रीमचं हो झोपतोय मी बास नाही बसत आहे मी झोपतो तर बस So as you can see, my mother doesn't understand what I do. She never really did. She never does even now. So whatever. So yeah, as I was saying, the plan is essentially कि Instagram पे we post reels about startups. We talk about news related to startups. We talk about different case studies on startups. We will be also discussing about the startup that I am working on essentially. So all of that stuff you'll see on Instagram, and a little bit of fun as well here and there. My startup routine and stuff like that, mostly related to startups. And on this channel also you'll see a lot of content that is related to making reports, doing analysis, studying different industries, also doing a little bit of startup stuff as well, working on some startup as well, creating reports, sending those reports to VCs,
We'll be doing all of that, studying new topics, studying about different subjects, doing some research as we did today, a little bit. Maybe I'll be doing a live tomorrow as well. I want to complete this paper, of course, but I couldn't today, unfortunately, because I'm feeling super sleepy right now. So let me just sleep. I'll be back, or I'll decide exactly how I'm going to uh, keep this thing entertaining as well, right? And it is hard. It is super hard to make this entertaining, because it's not about entertainment in the first place. It's about learning something, and learning something is never going to be a lot of fun. It's going to be super annoying for most part. So let's see, let's create some reports. Maybe I'll be doing live streams whenever I'm making those reports, actually. So making reports is just a little bit more fun than actually just reading a research paper, because in the report then you'll see me do a lot of secondary analysis. You'll also see I will also be recording myself talking to people, talking to VCs about different ideas. So we will be doing more outreach, and sort of create a community that is related to startups, related to funding, related to VC and all of that stuff. So I'm looking forward to it, man. I think this is something that I'm really interested in, and I want to spend my life working on different startups and stuff like that. Um, I mean, I don't want to become just like a theorist. I want to also become a practitioner. So also I'm going to sort of do serious work on the startup that I have as well. Uh, because I do not have a sort of a established startup right now. The thing that I'm working on is not really working out. We are still figuring out shit. It's like a project. It's not exactly a startup. We haven't figured out the revenue and all of that stuff yet, but we'll be doing that soon. So yeah, that's it. So yeah, I hope this was a little bit of fun. I don't know, but yeah, I enjoyed making this. I hope you guys did too. Um, so yeah, peace out, guys.